Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we will continue from the microbiology and phycology. But here we are discussing about the phycology person, or we have to discuss about the algae. In this lecture, we will discuss some introduction to algae and another one, that is the general characteristic features of the algae. Okay, so let's discuss about the phycology. If you see the word phycology, phycology দুইটা ওয়ার্ড রয়েছে, গোটে হলা phycos and another one that is the logos. গোটে হলা আমার phycus and another one that is the logos. Okay, phycus माने काना? Phycus रा माने हला algae. Okay, and logos रा माने हला to study. That means phycology हमें कहा के कहूचो to study about the algae, that is known as phycology. To study about the algae, that is called as phycology, और simply phycology के sometimes कहा जैसे algology बोली के भी कहा जैसे algology. Don't confuse with this word algology, or you may say that phycology. Okay, so if you see the word phycology or algae जदि दिखमा, algae word टा केनु असला? Algae word that came from a Latin word that is your alga. algae गोटे लाटिन वर्ड असला जहां ना हला alga. alga माने काना? alga माने हला seaweeds. इतर मीनिंग हला seaweeds. seaweeds. Okay, actually हमें जब देखमा, if you enter inside the sea, यदि हमें समुद्र भीतर के जिमा, then there will be presence of so many number of unwanted plants or unwanted small size plants माने presence. weeds माने काना? unwanted plants or unwanted grasses मन को कहसे weeds. अनावना जातीय जन हमर grasses रहसी ताके कहसी weeds बोली करी कहसी unwanted grasses. Okay, तो sea रे among there is presence of so many numbers of unwanted grasses like plants, but these are not grasses. These are what? These are the algae. Okay, तो सेनो हमर असला alga word जेंटा हमर seaweeds रे algae रो discovery हेतिला. Okay, and algae what टा केन scientist provide करथिले? The term algae, ई term टा के provide करथिले? This term was given by the scientist, one of the great scientists or the father of taxonomy, that is your Carolus Linnaeus. Algae what टा के देथिले? That is your Carolus Linnaeus. Okay, देखो, if you see तो generally what is algae? algae is देखमा, algae these are non-vascular thallophytes. देखो, algae रो generally जदि हमें जिमा, algae actually कहा के कहसु? algae that are non-vascular thallophytes. non-vascular thallophytes. Okay, non-vascular माने का? They are not having the xylem phloem. vascular tissue रे हमर के ऐसी xylem and phloem. non-vascular माने का? Without xylem and phloem. without xylem and phloem. Okay, and thallophytes कहा के कहसी? देखो, thallophytes दुईटा वर्ड रसला thallus and phyta or phyton. Okay, thallus माने का? thallus माने हला that is undifferentiated parts. जेन plant, phyton रो माने का? plants. phyton रो माने हला plants. जेन plant रो body जदि हमें देखमा, तार जदि root, stem, leaf किछि जदि differentiate नहीं होतबा, ताके कहमा thallus body बोली करी कहमा. Right, so thallus माने का? that is undifferentiated, or there will be no differentiation of root, stem and leaf. Okay, root, stem, leaf इटा जदि हमर differentiate नहीं बार तो ताके कहूचो हमें काम बोली करी thallus. Okay, that means algae गोटे एंता plants है
algae गुटे काने that is the plants. Plant under रे आउचे, but that is not having proper, there is absence of root, there will be absence of stem, there will be absence of leaves. केनटा leaves है, केनटा stem है, काना हमें differentiate करी नहीं पारो. That's why तार body के कोहे से का बोली करी, that is your thallus body बोली करी कोहा जैसे. Okay? तापरे देखो, algae जी देखमा, these are photosynthetic and oxygen evolving plants. इमान को जो देखमा algae, that is oxygen evolving, माने काना ऑक्सीजन रिलीज करसी, ऑक्सीजन से काना करसी रिलीज करसी किए, दैट इज योर algae. एंड ऑक्सीजन हमर केते बेले रिलीज हेसी जदी हमर प्लांटटा केन प्रोसेस करछे, दैट इज योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. दैट मींस algae आर व्हाट फोटोसिंथेटिक. algae हला हमर काना फोटोसिंथेटिक, that can utilize the carbon dioxide and water to make the carbohydrate, right? Then किछटा algae that may be unicellular, किछटा हमर algae unicellular अच्छा, some algae that are multicellular अच्छा. ओके, माने गुटे सेल द्वारा बनिथिबार algae भी अच्छा, बहुत सारा सेल रे बनिथिबार algae माने भी अच्छा. तार संगे संगे if you see some algae that are prokaryotes, it is algae amor prokaryotes on, and some algae that are eukaryotes. किछटा algae amor prokaryotes, किछि algae amor eukaryotes. prokaryotes हमें कहा के कहसु जेन मनकर प्रॉपर्ली तकर जदी न्यूक्लियस डिफरेंशिएट नहीं होतबा, न्यूक्लियस रे जदी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थिबा, न्यूक्लियस रे जदी न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं थिबा, क्रोमैटिन मटेरियल नहीं थिबा, न्यूक्लियोलस नहीं थिबा, ताके कहसी प्रोकैरियोटिक सेल बोली के कहा जासे. ओके, तो हमर किछटा algae जेंदा के हमर सियानोबैक्टीरिया और जाके ब्लू ग्रीन algae बोली के कहसु. ब्लू ग्रीन algae जेंदा कि नष्ट हला, आना बना हला, इमानकर केस रे देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. तो समांतर सेल जदी देखमा that are having prokaryotic cell organization. Okay, but generally higher algae जेतल देखु छु, higher group of algae that are having the eukaryotic cell. ओके, किछटा algae unicellular जेंता कि हमर क्लामाइडोमोनास गुटे आके बेला में तार लाइफ साइकिल बाबत रे डिस्कस करमा. क्लामाइडोमोनास गुटे यूनिसेलुलर algae. किछटा हमर कॉलोनियल algae माने गुटे कॉलोनी हिसाबे रहसन, गुटे ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, ताके कहसो में कॉलोनियल algae बहुत सारा सेल्स मिसी करी गुटे ग्रुप फॉर्मेशन करितिसन. जेंता कि हमर गुटे एग्जांपल हला वॉलबॉक्स स्टार भी लाइफ साइकिल में आके बेला डिस्कस करमा. ओके, तापरे हम ओएडोगोनियम देखमा. ओके, समानकर जदी फिलामेंट तकर फिलामेंटस algae बोली करी कहा जैसे से माने गुटे सेल पर गुटे सेल, गुटे सेल पर गुटे सेल ओटा चेन हिसाबे जॉइन ही करी थिबे, राइट? सो this is your general characteristics or general idea about your algae. तो हमें algae के जे देखमा another concept हमें पहला डिस्कस कर दो जे algae फादर ऑफ algology और फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा के कहा जाए. फादर ऑफ फाइकोलॉजी, who is father of phycology? That is your Epiphris. Okay, Epiphris के कहा जैसे काम बोले कि he is the father of phycology. Whereas father of Indian phycology कहा के कहा जैसे father of Indian phycology, one of the student of Epiphris, that is M.O.P. Younger. M.O.P. Younger, he is known as father of Indian phycology. ये दो इतने क्वेश्चन आइसी. ओके, so he is the father of phycology, that is your Epiphris, जे कि हमर algae के different classes रे डिवाइड करतिले. algae रो क्लासिफिकेशन जतले में डिस्कस करमा, we will discuss about that Epiphris. father of Indian phycology को आइसी M.O.P. Younger के. ओके, next, what is the status of this algae in the plant kingdom? Okay, so let's see the status of algae in plant kingdom. देखो आगरु हमें डिस्कस करूतला प्लांट किंगडम जेतेले हमें देखु छु, प्लांट किंगडम के ब्रॉडली हमें किछटा ग्रुप रे डिवाइड करू छु. जेंदा कि हमर हला क्रिप्टोगेम्स आ गुटे हला फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स and another one, that is the phanerogames. Phanerogames. Cryptogames माने का
इतर बाबद रे आगुरु हमें डिस्कस करी सारी छु क्रिप्टोगेम काना फेनोरोगेम्स काना हमें आगुरु क्लास रे भी डिस्कस करी सारी छु बट इनो मैं आउथरे रिमाइंड कर दबार के चाहूँ छे क्रिप्टोगेम्स ओके क्रिप्टोगेम माने काना क्रिप्टो माने हिडन ओके एंड गेमस माने हला मैरिज जेते बेले मैं आर्किगोनियर्स क्लास स्टार्ट करथिली से टाइम रे ब्रायोफाइट्स पढ़ाला बेले मैं डिस्कस करथिली क्रिप्टोगेम्स काना फेनोरोगेम्स काना जनमान को डाउट होचे आहुर डिटेल्स जानबार के चाहूछ यू कैन गो टू द आर्किगोनियर्स लेक्चर इन दैट आर्किगोनियर लेक्चर यू कैन find this very detail that is cryptogames kana phanerogames kana okay anyway let me say something about this cryptogames hidden marriage mane kana marriage in the sense itar jen reproductive structure ache itar jen reproductive structure ache the reproductive structure that is hidden or that is very small reproductive structure ta बहुत small reproductive structure thisi satir lagi take कहसे cryptogames so that the reproduction process that is hidden reproduction process and phanerogames phanero mane hala open and gamus ra mane hala marriage open marriage ken sense re koha gala that means they are having the larger reproductive structure okay the iman ko reproductive structure ta that is larger okay तो हमें टोटल ग्रुप ऑफ प्लांट टोटल जितके प्लांट अच्छे दुईटा ग्रुप रे डिवाइड करना क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स क्रिप्टोगेम कहा के कहमा जिन प्लांट्स मानकर तकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखमा दैट इज हिडन और देयर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज अननोन और clearly that is not visible due to the very small size of reproductive structure that are called as your cryptogames. Whereas in case of your phanerogames, the plants which are having the larger size of reproductive structure so that we can easily see their reproduction process ताके कहूँ हमें ताके रखूँ हमें phanerogames under रे रखूँ okay तो अमर algae कहाँ under रे जाऊँ algae that come under this cryptogame okay next page रे मैं करूँ छे जे हमर algae के रखूँ हमें कहाँ under रे cryptogames under रे रखूँ that means इमान का reproductive structure that is very small okay algae रहुचे हमर कहार अंडर रे क्रिप्टोगेम्स अंडर रे बट क्रिप्टोगेम्स के हमें काना करूछु तीनटा ब्रॉड क्लास रे डिवाइड करूछु काना काना वन इज द डिवीजन तीनटा डिवीजन रे डिवाइड करा जैसे गुटेला थालोफाइटा another one that is bryophyta and pteridophyta okay थालोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा तीनटा ग्रुप रे डिवाइड करछो हमें प्लांट किंगडम के क्रिप्टोगेम्स के व्हेरेज फेनोरोगेम्स के हमें दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करछो गोटे हला जिम्नोस्पर्म आ गोटे हला एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंड अनदर वन दैट इज योर एंजियोस्पर्म okay anyway amar algae ta kahar under re ache algae that come under this thallophyta itar under re ase amar ke that is your algae okay algae asla thallophyta under re that means algae ke se thallophyta mane kana thallos and phyton duita word ro asla agaru discuss kala thallos mane kana ja root stem leaf ame differentiate kari na par okay देखो तापरे amar bryophyta तापरे टेरिडोफाइटा तापरे जिम्नोस्पर्म तापरे एंजियोस्पर्म अछि तो इन हमर जन डिस्क्राइब करा दै छै हमर algae परे ब्रायोफाइटा परे टेरिडोफाइटा परे जिम्नोस्पर्म परे एंजियोस्पर्म धीरे-धीरे इन हमर काना छै प्लांट रो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते जाय छै सबुतरु सिंपलेस्ट प्लांट हिसाब जे जिमा दैट्स योर algae कहला सबुतरु सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट ओके लेट मी राइट हियर these are the simplest group of plant ताकर यदि हमें स्ट्रक्चर देखमा एंड यदि हमें यहाँ देर मॉडर्न और द एडवांस प्लांट संगे यदि ताके हमें कंपैरिजन करमा तो algae are very simple body organization so that ये माने हेले very simple structure and these are the smallest group of plants सबुतरु smallest plant हो जे कि that is your algae and सबुतरु earlier जदि जिमा primitive most primitive plant हिसाब से कंसीडर करमा मैं कहा के that is your algae okay तो algae के कोई परमा this is your most primitive plant
most primitive plant, that is your algae. Okay, algae is your most primitive part. They are having the very simple structure. These are the smallest plant. ओके मोस्ट प्रिमिटिव माने काना जतके भी प्लांट्स देखु छु थालोफाइटा ब्रायोफाइट स्टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सब थ्रू फास्ट केन ग्रुप ऑफ प्लांट आइचे दैट इज योर algae. ओके सो हमर algae जेहेतु फास्ट आइचे एंड हमर फास्ट लाइफ जतले डिस्कशन करू छु फास्ट लाइफ केनु स्टार्ट हेतिला लैंड रे स्टार्ट हेतिला ना वाटर रे स्टार्ट हेतिला यस वाटर रे स्टार्ट हेतिला जेहेतु हमर फास्ट organism water re establish itla water re present thila just like that first group of plant or most primitive group of plant that is your algae also found in water. So that jetki bhi algae dekhu chun that are aquatic to algae amar kan hela that is your aquatic. Okay, that means that are found in water, that are found in water dekhwar ke means बट ब्रायोफाइटा जेतले जमा ओके नेक्स्ट आमे जेतले फेर पढमा आमे डिस्कस करमा द ब्रायोफाइटा जे देखमा दैट इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट दैट कम्स टू द लैंड पहला प्लांट केनु ग्रो कला पहला ग्रो कला इन वाटर जेंटा केंटा दैट इज योर algae तापरे हमर टिके एडवांस हला किए दैट इज योर ब्रायोफाइटा केनु ग्रो करसी जिन जगहटा उदालिया थिबा बट नॉट सो मच अमाउंट ऑफ वाटर और नॉट ड्राई टोटली ड्राई नै थिबा टोटली ड्राई नै थिबा कि टोटली पानी नै थिबा से जगह हमर गुटे इंटरमीडिएट जोन उदा उदा थिबा ताके कहसु हमें काम बोली कि दैट इज कॉल्ड योर मॉइस्ट प्लेसेस बोली कि कहू छु सैडी प्लेसेस बोली कि कहू छु संता जगह रे देख पार के मिल सिकिए दैट इज योर ब्रायोफाइट्स देन पूरा ड्राई लैंड रे और नॉर्मल लैंड रे देख पार के मिल सिकिए दैट इज योर ट्रेडोफाइट्स तो ट्रेडोफाइट्स के कहे से फास्ट ग्रुप ऑफ प्लांट दैट सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड ऑन द लैंड बट जदी ब्रायोफाइट देखमा उदा उदा रे थिबा जदी सुखा हे गला टोटली ड्राई हे गला से जागा रे ब्रायोफाइट्स ग्रो करे ने पारे सो दैट जस्ट हमर algae रो टिके एडवांस ला किए दैट इज योर ब्रायोफाइट्स नो टिके एडवांस होचे टेरिडोफाइट नो आउट टिके एडवांस दैट इज योर जिम्नोस्पर्म एंड द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट किए दैट इज योर एंजियोस्पर्म ओके एडवांस सबुतरो मोस्ट एडवांस ला हमर के दैट इज योर एंजियोस्पर्म राइट तो हमार प्लांट किंगडम रे केनु रखला हमें algae के इटा मैं कहा के देखो तो ना प्लांट किंगडम के देखो तो ना तो प्लांट किंगडम के हमें रखला केनु दैट इज इन दिस थालोफाइटा क्वेश्चन ऐसी दैट कम अंडर द थालोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांट्स ओके लेट्स डिस्कस सम of the scientists and their contribution to this field of phycology के किसी तो साइंटिस्ट मानकर कंट्रीब्यूशन डिस्कस करो contribution of some biologists to the field of this phycology field के किछिटा साइंटिस्ट मानकर काना काना कंट्रीब्यूशन थिला फर्स्ट वन दैट इज योर एफी फ्रिस फर्स्ट देखो एफी फ्रिस जाके मैं फादर ऑफ अल्गोलॉजी और फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोली करी कहू छु ओके सो ताके कहला मैं काम बोली करी एफी फ्रिस ही इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी ओके फादर ऑफ फाइकोलॉजी देन जदि हम देखमा Amor F. Fritz he completed his PhD degree from Munich University of Germany. तकर PhD के अनुसे complete करथिले PhD टा complete हेतिला in Munich University of Germany. Okay. सो जर्मनी रे तकर पीएचडी से कंप्लीट करथिले के एफी फ्रिस जाके मैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी और फादर ऑफ algae बोली करी कहू ओके तापर देखो से ही वर्कड ऑन फ्रेश वाटर algae फ्रेश वाटर algae माने काना किछटा algae
that are found in fresh water, some algae that are found in marine और सी वाटर रे भी देखबार के मिलसी तो एपिप्रिस कहार ऊपर काम करबाटा स्टार्ट करथिले स्टार्टेड वर्क्स ऑन फ्रेश वाटर algae ओके फ्रेश वाटर algae ऊपर से काम करबाटा स्टार्ट करथिले एपिप्रिस तापर काना करथिले से गोटे बुक्स लिखिथिले ताकर बुक जो देखमा one of the important book that is the structure and reproduction in algae ताकर बुक रो त टाइटल हला structure and reproduction in algae ओके इधर हमर दुईटा वॉल्यूम अछि गोटे वॉल्यूम 1 और गोटे वॉल्यूम 2 ओके तापरे ए जे हमर स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ algae अछि इतरे से algae रो क्लासिफिकेशन बाबत रे डिस्क्राइब करथिले describe about the classification of the algae classification of algae okay so it is हमर कना that is about your एपिप्रिस next जाऊं that is the mop younger जाके कहू हमें फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी 2 नंबर mop younger okay he is known as father of modern Indian phycology okay देखमा he is the student one of the student of एपिप्रिस student of एपिप्रिस एपिप्रिस रो स्टूडेंट ऑल्सो के that is your mop younger and he completed his phd under एपिप्रिस अंडर रे ही तकर phd से कंप्लीट करथिले के mop younger and he was the former professor of madras university रो प्रोफेसर थिले former professor of madras university okay देखो mop younger जाके कहूचो से फॉर्मर प्रोफेसर थिले केन यूनिवर्सिटी रो थिले माड्रास यूनिवर्सिटी रो थिले देन हम जे देखमा mop younger गुटे प्लांट ऊपर काम करथिले गुटे ग्रीन algae ऊपर काम करथिले एंड ताके ना दिथिले काम लिखरी माने डेडिकेट करथिले एपिप्रिस के एंड तार ना दिथिले फ्रिसेलिया ट्यूबरोसा ओके तो हमर mop younger he found a green algae एंड ताके नेम देथिले कांबली की नेम्ड एच तर ना थिला फ्रिसेलिया ट्यूबरोसा okay that is according to the name of the scientist एपिप्रिस रो ना हिसाब ताके ना दिया गला फ्रिसेलिया ट्यूबरोसा because she was the student of एपिप्रिस तकर टीचर के डेडिकेशन करी करी ताके ना देथिले फ्रिसेलिया ट्यूबरोसा गुटे ग्रीन algae that is your mop younger is the father of Indian phycology okay तापरे आ गुटे टीवी डेसिका चार्जिया 3 नंबर आ गुटे इंडियन फाइकोलॉजिस्ट तकर नाम ला टीवी डेसिका चार्जिया okay he completed his MSc in Presidency College of Madras okay तकर MSc केनो हितला Presidency College of Madras okay generally our question ta एपिप्रिस and mop younger generally ऐसे don't worry about this jet कि हमें साइंटिस्ट और नाम मने रखवार আছে काना करबार আছে don't worry about this हमको दुईटा साइंटिस्ट और नाम मने रखवार আছে एपिप्रिस and that is your mop younger एपिप्रिस father of phycology mop younger father of Indian phycology okay just किछटा साइंटिस्ट और ना जानि थिबार कथा एक्वांटेड थिबार कथा तो केनसे जगह रे केनसे बायोलॉजिस्ट और ना जदी आसु छे पहले हमें ना जानि पारबा कथा he is belong to India he is a Indian phycologist or Indian how can
branch ro an amar se biologist that we have to know, so that we discuss हम कर दो किसी का biologist मान करना. Okay, तब देखो टीवी देसिका जो he was a student of MOP Younger, student of MOP Younger. देखो MOP Younger he was the student of FE Fritz and TV Desikacharya he is student of MOP Younger and he studied on red algae. ये कहाँ ऊपर काम करते हैं? Worked on red algae. red algae ऊपर इसे काम करते हैं TV Desikacharya. ओके, तो এটা গেল আমার কিছুটা scientist or biologist they contribute in this field of phycology. Okay, let's discuss some general characteristic features of the algae. Algae ର କିଛିଟା general characteristic features ବାବଦରେ ଆମେ discuss करो. Okay, so I think this will be half ଆମେ ନ discuss करमा, rest half we will discuss in the next class. तो ଆମର general characteristic feature of algae. Okay, बहुत मस्त लगसी this paper, that is very interesting paper. algae यहाँ तो देखो इतनी बेल तक हमें just outline जानना algae काना algae रो ना केंता कर दिया गला algae रो ना किन word रो आसला के देतिले ना, that is your Carolus Linnaeus. Father of algae कहा के कोई सो FE Fritz. Father of Indian phycology कहा के कोई सो MOP Younger. ये सब बिजनेस जस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करा, राइट? यहाँ दे हमको डिस्कस कर वाले से किछिटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ algae. ओके, तो देखो फर्स्ट वन दैट इज योर ऑकरेंस. केन जगह रे देख पार के मिलसी algae. फर्स्ट देखना algae माने जनरली केन जगह रे देख पार के मिलसन. ठीक है, आगुरु जस्ट मैं कहली द algae आर जनरली फाउंड इन वाटर, दैट मींस दीज आर ट्रूली aquatic plants. These are aquatic plants. Okay, generally these are found in water body भितरे either से माने free floating थिबे या फिर केन से जगह रे attach करी थिबे water body भितरे. In water body किछिटा free floating माने freely भासुथिबे और किछिटा algae जेंदा के oidogonium that may be attached on any surface or काना हितिबा attach हितिबे on any surface. किछि surface रे attach करिथिबे other plants ऊपर या फिर जन rock surface थिबा जदि water body भितरे बेले they may attach on that. Okay, अगर कहले जे first group of plants can talk, that is your algae, that means they are found in water. Truly these are aquatic plants. Okay, तापर देखो aquatic but some are fresh water and some are marine water algae. किछि algae that are fresh water algae and किछिटा आमर marine water algae or sea water algae. For example, गोटे fresh water algae रा example जे नमा, that is your Chlamydomonas ला, Chlamydomonas. Okay, या फिर you may see another example, that is your Volvox ला. Okay, इटा मन होचा हमर काना, that is your fresh water algae. Next हमर example जिमा marine algae or sea water algae. Generally marine water algae रे जैसे नंबर red algae, brown algae. Okay, red pigment present is rhodophytes under रे ताके रखसो और rhodoplast present is red algae. Another one that is your brown algae. तर बापोदरा मैं आके बोले discuss करमा more details. गुटे red algae रे example है ला Polysiphonia. इधर भी life cycle में discuss करमा Polysiphonia. Brown algae रे गुटे है ला Ectocarpus. Okay, so these are some grouping for the algae. One is freshwater algae and another one that is your marine water algae. Okay, next देखो तकर जदि हमें टिश्यू देखमा, केन टिश्यू प्रेजेंट थिसी केन टिश्यू एब्सेंट थिसी.
जे देखमा मानकर केस रे मैकेनिकल टिश्यू दैट इज ट्रूली एब्सेंट मैकेनिकल टिश्यू जी देखमा दैट इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ algae मैकेनिकल टिश्यू माने का ते टिश्यू जेंटा कि स्ट्रेट ग्रो करबा लागि हेल्प करबा वर्टिकली ग्रो करबा लागि हेल्प करबा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करबा सदा के क्वेश्चन मैकेनिकल टिश्यू बट मैकेनिकल टिश्यू टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ algae जदि algae देखमा जनरली माने केनता ग्रो करसन हॉरिजॉन्टली ग्रो करसन वाटर भितरे ग्रो करसन ऊपर के एंता वर्टिकली सहजे माने ग्रो करी नै पारो राइट कहला जे तकर पाखे मैकेनिकल टिश्यू नै नो सपोर्ट देबार लागि किछि टिश्यू प्रेजेंट नै right mechanical tissue that is absent as well as vascular tissue that is also absent vascular tissue में कहा के कहसु जेन टिश्यू vascular tissue माने जेन टिश्यू हमर वाटर रो मूवमेंट रो लागि हेल्प करछे या फिर जेन टिश्यू ता हमर फूड ट्रांसलोकेशन रे हेल्प करछे ताके कहसु vascular tissue vascular व्हाट असला वेसल्स रु असला वेसल माने कना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जेटा के हमर हायर प्लांट्स देखमा जाइलम प्रेजेंट थिसी वाटर रो ट्रांसलोकेशन करबार लागि फ्लोइंग थिसी फूड रो ट्रांसलोकेशन करबार लागि बट इ वास्कुलर टिश्यू दैट इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ algae वाटर रे डायरेक्टली प्रेजेंट अछि गोटे कथा सुनो algae ता डायरेक्टली वाटर बॉडी भीतर प्रेजेंट अछि जदि हमको डायरेक्टली डेली वाटर मिलुछि हमें पानी कलेक्ट करबार के जिमा के सपोज हमको हमें चाहना हमको हमें वाटर बॉडी भीतर अछु चाहना हमें वाटर पी पारुछु वाटर नहीं पारुछु राइट तो से केस रे हमें वाटर बोतल नहीं करी पीमा के पखर जदि वाटर अछि नहीं जस्ट लाइक दैट algae that is found in water जेतो वाटर बॉडी भीतर अछि तो ताके वाटर अपटेक करबार किछि जरूरी नै न सत्य लगी तार केस रे देयर इज एब्सेंस ऑफ द vascular tissue okay so there is absence of mechanical tissue there is absence of the vascular tissue okay तापरे देखो range of thalostructure इतरु short note ऐसे what are the ranges of thalostructure range of thalostructure केते range रे रहउचे thalostructure ता किछिटा हमर जे देखमा first one that is motile unicellular motile माने काना they can move from one place to another place okay motile माने काना they can move from one place to another गुटे प्लेस रो आ गुटे प्लेस के माने मूव करि पारबे then unicellular माने काना they are made up of one cell गुटे सेल द्वारा बनिथिबे but they can move from one place to another place for example if you see this is your chlamydomonas रो तार स्ट्रक्चर तार लाइफ साइकिल आके गला में डिस्कस करमा this is one of the example chlamydomonas देखो this is made up of one cell ई गुटे सेल द्वारा बनि छी but that can move गुटे जागा रो आउटे जाय के that can move with the help of its flagella इधर पाके flagella present अछि again that is not come under the animal kingdom that come under the plant kingdom okay तो इटा हला हमर गुटे एग्जांपल that is your chlamydomonas okay next हमर filamentous the number type of thallus देखबार के मिलसी that is your okay before that motile unicellular motile colonial another one motile colonial माने काना that can move and colony formation करथिसन they form colony formation करथिसन colony माने काना देखो सपोज गुटे वॉलबॉक्स देखमा ये गुटे में वॉलबॉक्स रो ग्रुप बनाउ छ देखो वॉलबॉक्स रे बहुत सारा क्लामाडोमोनास भलिया सेल्स माने एंत ग्रुप रे प्रेजेंट थिसन ओके गुटे बॉल टे इमेजिन करो गुटे बॉल रे सबु आडे बाहर साइड रे काना प्रेजेंट थिबा क्लामाडोमोनास भलिया सेल्स माने एंत बाहर के एंत बाहरी थिबे सबु आडे टोटल सरफेस रे इधर लाइफ साइकिल भी हमें डिस्कस करमा तो इनम बहुत सारा क्लामाडोमोनास लाइक सेल्स गुटे जागा रे एंड कॉलोनी फॉर्मेशन करिसन ओके यदि कॉलोनी फॉर्मेशन करिथिबे त एटा के कहसो हमें कॉलोनियल algae बट दे कैन मूव
दे कैन रोलिंग मूवमेंट जदी वाटर देखमा वाटर रे गुडगुडु तुसन वाटर रे रोल करू तुसन एंड देन करी आके आके गुडगुडु तुसन तर बाबत भी हम डिस्कस करमा ओके सो वन ऑफ द एग्जांपल motile colonial that is your valvax this is your valvax okay and the colony माने थिबे केही सेपरेट नै हो ओके केनता करी थिसन गाना थिसन डिस्कस करमा आके हमें जेतले valvax रो लाइफ साइकिल बाबत रे में डिस्कस करमा ओके next है another type just wait a minute wait just wait a minute last number रहला टिके just let me टिके करेक्ट कर देसी ओके देखो हमर लास्ट हल्ला दैट इज योर filamentous algae तीन नंबर थालस दैट इज filamentous filamentous माने का जब किछटा algae suppose this is one algae जे देखमा यू नो सेल माने काना तुसन सेल माने तल के तो ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर के अंत जॉइन हेतल जाउछबे गुडे चेन रे filamentous रे हमर काना होतबा सेल्स माने काना होतबे जॉइन होतबे इन ए चेन गोटे चेन आकार रे माने जॉइन हेतल जाउथबे केनता करी हबा जेतेबेले गोटे सेल रो माने को धरि नियो एटा सेल गोटे अछि इ सेल रो डिवीजन जेतेबेले होचे जुरे न्यूक्लियस फॉर्मेशन ला साइटोप्लाज्म डिवीजन हला बट टोटली हमर दुही सेलटा गोटे वॉल रे माने अटैच करी रहि तो दुईटा सेल हला नेक्स्ट जेतेले डिवीजन हला सपोज इ सेलटा डिवाइड हबा इ सेलटा भी डिवाइड हबा ओके तो इन फेर डिवाइड हला बट वॉल माने मानकर काना होचे कॉमन होचे तो धीरे धीरे काना होचे गुटे चेन हिसाब से ग्रो करते चली छे इता के कहसो में काम लिखि दैट इज कॉल्ड filamentous form of algae फॉर एग्जांपल दैट इज सीन इन केस ऑफ ओइडोगोनियम केस रे देखबार के मिलसी filamentous form ता ओइडोगोनियम रे देखबार के पेमा तापर गुटे हमर ब्लू ग्रीन algae नॉस्टॉक केस रे देखबार के पेमा ओके तो এটা গেল আমার কানা दैट इज योर filamentous form of algae आउट लिखित एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दैट इज योर स्पाइरोगाइरा ओके এটা গেল আমার কানা থালস रेंज ऑफ थालस ओके नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करबा algae केस रे किछटा पिगमेंट्स रो देखबार के मिलसी प्रेजेंस ओके और हमर क्लोरोप्लास्ट जतले देखु छु दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हमर केनटा टाइप रो क्लोरोप्लास्ट देखबार के मिलसी दैट वी हैव टू डिस्कस और केनटा टाइप रो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट
କାହାର under ଆସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ under ଆସି କାଣା କାଣା different types of plastic देखबार के मिलसी algae मानकर केस रे केन algae रे केन type of plastic देखबार के मिलसी that we have to discuss. Then we will discuss about the algal pigments, then what are the reserve food material in case of algae, and what are the different process of reproduction in algae that we have to discuss in the next class. And after completion of the all these general characteristic features, in the next class we will discuss about the classification of algae that was given by the scientist or the father of phycology, that is your Ephiphanes. Okay, I think you may enjoy this lecture. If any doubt, you can write in the comment section. And another things I want to say, when you are taking my class or ଯେତେବେଳେ ତୁମେ class କରୁଛ, just bring a copy with you, and what I am writing on the board you have to write this, and what I am saying in the during the time of class we have to write this. Then that will be a very good note for all of you. Okay, thank you. Please like, share and subscribe our channel.